Hello everyone, today we're going to solve first lead code problem, and this is a very easy problem. It's just like a very beginner to the code, and it becomes easy to understand to all of the students, uh, to the all skill level. It would be easy to understand. Now our first problem is mentioned as, we can see that lead code problem number 9, which is known as palindrome number, and it will be the easy problem, but we are going to solve this with the Python, which is the very legendary, you can say, and very popular and amazing language, programming language. All right, now what is the palindrome number? As in the previous video, I said that I will start a series of solving the lead code problems related to the interview questions. So this is the one of the most easiest problem that I'm going to solve in this video. All right. So जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इंटरव्यूज कोडिंग इंटरव्यू से रिलेटेड। तो उसमें हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम नंबर। नाउ द फर्स्ट थिंग इन द पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है कि आप पैलिंड्रोम नंबर ये होता है कि जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक बता देगा एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। लाइक let's take an example. If you have a number 1 2 3, is it the palindrome? How you can check is it palindrome or not? You go with the last number, add it 3, then take the second number 2 and take the last one, which is 1. Is it the same? No, it is 123 and it is 321. It is not same. Now go back, change the color to the black. Now कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो कि बता सके कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है? It's a very easy thing. What you have to do is to get a number 1 2 2 1. Is it a palindrome or not? Let's pick up the last number, which is ith. You can say -1 right here, and then the second last number -2, just like according to the index. If it is an array, then you can say it's index. आपको आसानी समझाने के लिए मैं इसको एज इंडेक्सेस के तौर पर ले सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा आगे जाके मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको एरेज में आती हैं प्रॉब्लम्स तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपको ये फर्स्ट नंबर आपने पुट कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू पुट द सेकंड वन। आपने सेकंड वन को पुट कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू पुट द third last element you are going to put here, and last one you are going to put. Now it's same. Now we can say that it is a palindrome number. All right, let's sharpen this stick. How we can reverse this number? This is the problem that we are going to face. Now think about it. If we take 1 2 3 2 1, this is the number. We are going to reverse it. How we can do this? First of all, हमें क्या करना होगा कि इस नंबर के अंदर से इसका ईच डिजिट निकालना होगा। यू नो, दिस इज अ यूनिट, दिस इज अ टेंस, दिस इज अ 100, this is a 1000, and this is the 10,000. We can say that. All right, just for your easiness. तो अब हमें क्या करना होगा? What we are going to do here, अब हमें ये करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम इस नंबर को अलहदा करना है। और इसको अलहदा कैसे करेंगे? हमें क्या करना होगा? इसका ऐसे करते हैं कि हम इसका मोड लेते हैं। किसके साथ? 10 के साथ। बिकॉज 10
आपको पता है कि जब हम मोड लेते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, एट द एंड आंसर मिलता है। जब हम इसका मोड लेंगे तो आपको पता है कि 120, 12, 30 टू 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा मोड के अंदर, ओनली द लास्ट नंबर, द रिमाइंडर 1। ऑलराइट, तो मोड के बाद हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास 1 तो आ चुका है, अब हमने क्या करना है। अब हमारे पास बहुत ही आसान चीज ये है कि हम क्या करें कि हम एक ऐसा करें कि एक डी नामी एक चीज बना लेते हैं और उसके अंदर अपना 1 स्टोर कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब हम इसका मोड लेंगे तो फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमें कोई ना कोई ऐसी चीज तो सोचनी पड़ेगी, वी शुड हैव टू थिंक अबाउट इट कि from by which technique we can shorten this digit to this. This is a very easy thing. We can do this. Now, just make a little bit space here. Now, how we can do this? हमारे पास ये भी नंबर है 321, this one। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 10 के ऊपर, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने हमें फेस करनी पड़ती है। what it is that when we are going to take the division, it will give answer in the decimal form like this: 1 2 3 2.1. We will get answer in this format, but we didn't need it. What we want, हमें तो इस नंबर को गायब करना है किसी ना किसी तरह, ताकि हमारे पास 4 डिजिट आ सके और हम हर मर्तबा इस प्रोसेस को कर करके जो है वो अपना रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट कर लें। ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एक आती है फ्लोर डिवीजन। द मेथड इज फ्लोर डिवीजन। व्हाट वुड इट डू, व्हाट वुड इट डज, it just returning you an answer without the decimal number like this. So forgot about the decimal part. All right, it's very easy thing, man. All right, then हमारे पास नंबर जो है वो कम होता जाएगा। Let's take it, I think so इसके पास जो all right, अब हमारे पास था, हमने मोड़ लिया, हमारे पास 1 आ गया। जैसे कि हमारे पास R है, रिवर्स नंबर में हमारे पास 1 आ गया। अब क्या होता है, हम मोड़ लेते हैं हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमने फ्लोर डिवीजन ली इस नंबर की, ठीक है, 1 2 3 2 1। हमने इसकी फ्लोर डिवीजन ली 10 के साथ, हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 2 1। अब इसका फिर हमने मोड़ लिया 10 के साथ, हमारे पास क्या आ गया, सॉरी इट्स नॉट दिस हमारे पास ये आ गया, हमारे पास आ गया 2, हमारे पास यहाँ आ गया 2। इसी तरह हमारे पास करता करता हमारे पास ये आ जाएगा। सो हमने तो इसका पैलिंड्रोम निकाल लिया क्योंकि ये तो सेम हो गया। नाउ अब हमने करना कैसे है, हमारे पास तो पैलिंड्रोम आ चुका है 1 2 3 21, लेकिन अब हमने क्या करना है। अब बहुत आसान चीज है एक, वो ये है कि हम कैसे पता चलेगा कि इसे कितनी मरतबा कितना नंबर आ सकता है। हमारे पास तो नंबर कोई और भी आ सकता है, जैसे लाइक छोटा नंबर भी आ सकता है 1 to 1, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास 1 0 0 1 भी आ सकता है, ठीक है। हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमारे पास कोई केस भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इसे करेंगे कैसे, हम इतनी बड़ी लूप कहाँ से लेकर आएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को खत्म करने के लिए हमने सोचा है कि जहां तक ये नंबर चलेगा हम उसे लेके जाएंगे। तो हम इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि फोर लूप तो हम यूज नहीं कर सकते। फोर लूप के अंदर ये होगा कि हमें उसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए, बट वी डिड हमारे पास लेंथ ही नहीं है उस नंबर की। अब हमें उससे में क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ हम यूज करेंगे वाइल।
अगर आपने while के बारे में पढ़ा है तो while लूप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि हमारा नंबर कहाँ तक चलेगा. Let's move to the window coding platform. Now just here make a new uh, file जैसे palindrome.py. I'm going to make a palindrome number which should be easier. Now actually I'm going to code using oops and the data structures because it would be prefer to code using oop and dsa क्योंकि ये फंडामेंटल्स नहीं बल्कि एक जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी को जाहिर करती हैं. इसलिए आपको जो भी कोड मैं करवाऊंगा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको यूजिंग क्लासेस के थ्रू करूं और साथ ही साथ जो है वो आपको उसके बारे में यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू डायनेमिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं. ठीक है. पैलिंड्रोम ऑफ नंबर क्योंकि मेरी फाइल का नाम जो है वो पैलिंड्रोम था इसलिए जो है मैंने इस पैलिंड्रोम ऑफ नंबर लिखा है. अब मेरे पास कोई भी नाम आ सकता है. ठीक है. हमारे पास तो नंबर आ चुका है. अब हमारे पास क्या चीज है कि हमने कोई भी चीज है हमारे पास नंबर है. अब नंबर कोई भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया. अब हमें एक डायनेमिक कोड लिखना है जो कि हर सॉल्यूशन के लिहाज से बेस्ट हो. और वो कैसे होगा जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक डिजिट रखा था और उसके अंदर पे मैंने क्या किया था वैल्यू स्टोर करवाई थी. इसलिए मैं क्या करूंगा एक डिजिट बनाऊंगा लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे पास एंड रिजल्ट क्या है हमारा रिवर्स्ड नंबर नम रिवर्स वुड बी इक्वल्स टू जीरो. हमारा नंबर जीरो होगा इनिशियलाइज विद जीरो. इसके अंदर कोई सिर्फ जीरो है. ठीक है. अब हम क्या करना चाहेंगे. अब हमारे पास नंबर तो है. अब हमने कैलकुलेट करना है डिजिट क्योंकि हमें तो डिजिट चाहिए जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम लिया था मोड. अब मोड लेने के बाद हमारा जो नंबर था हमें फर्स्ट डिजिट मिल गया था जब हमने उस नंबर को रिवर्स किया था. ठीक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट टू टेक द नम using a percentage symbol and we can take the mode by 10. Now in this case our digit is stored in our our mode is stored in the digit form. Now what we are going to do we are going to call the reverse number and added it multiply it with the 10. What's 10 because uh, it's making it ये क्या करता है इसको int के अंदर ही रखता है just like इसको करेक्टर बेस स्टोर नहीं करता इसको int ही रहने देता है. And then we are going to add digit. Alright, this is one thing. Now at the last one हमने क्या किया था हमारे पास चले जीरो था. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 1 नंबर आता है हम क्या करते हैं उसका मोड लेते हैं हमारे पास 1 आ जाता है डिजिट के अंदर स्टोर हो जाता है. डिजिट के अंदर स्टोर होने के बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 एंड प्लस 1 वी गॉट अ 1. ऑलराइट. तो इस तरह हम लोग चल रहे हैं. अब ये होगा कि हमारा जो नंबर है हम उसे फ्लोर डिवीजन के थ्रू इज इक्वल्स टू आई थिंक सो like wait yeah. अब जस्ट हमने ये तो लगा लिया बट हम भूल गए कि हमने लूप भी चलानी है. ऑलराइट. just cut this code from here and we are going to use while loop. while num जब तक हमारा num है ना num के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है हम क्या करेंगे इसको चलाते रहेंगे. ठीक है. बट एट द एंड हमारे पास क्या रिटर्न होना हमें करना है रिटर्न यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न रिवर्स सॉरी नम रिवर्स. ठीक हो गया. ये तो हो गया हमारे पास. अब जो है वो हमें देखना होगा कि हम इस क्लॉज का कॉल कैसे करते हैं. ओहो. सो नाउ हमारे पास एक भी हमने क्योंकि
एज अ ऊप के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्लासेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। तो हम एक क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम कॉल करते हैं हमारा सोल्यूशन को, और जब हमने सोल्यूशन को कॉल कर लिया अब हम उसके नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो obj dot palindrome of a number, so we need only single thing, which is x. What x? What would be the x? X should be the int, it should be the input, enter the number. All right, हमने तो कैलकुलेट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू चेक कि हम इसका रिवर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सो हम पाइथन लिखेंगे palindrome dot py, enter number 1 to 1, and it's returning nothing because we are just going to return. Now it's time to print the solution to check whether it is returning or so 1 2 3, sorry 1 2 3 4, it is returning 1, which is not a good thing. We have to check what's the problem with our number. All right, we got a problem that we picked this inside this one, but in this case we have to do this. Now again we are going to 1 2 3 4, so we are, it is returning 4 3 2 1, but अभी हमारा कोड खत्म नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर किस बेस पे करना है? अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इफ स्टेटमेंट, if num equals to the num reversed, then what we are going to do, we are just going to return, we are going to print, all right, print statement, it is a palindrome number, it is palindrome. What was the number? It is, it's the number reverse number, num reverse. We will use this num reversed. All right, it's a palindrome number. All right, so we didn't need to return anything. Then we're going to use else, nothing, else we are going to print it is not a palindrome. Num reversed, comma, again we are of num. All right, we have to use this thing here. Don't worry, it's a very easy thing. Just need to, all right, it's a very easy thing. We are just not going to return anything, we just returning the code. All right, sorry. Now अब हमें बताना है कि हमारा, अब जस्ट हमें प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करने की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम ऑफ द नंबर 0। अब ये हमारे पास 0 दे रहा है, इट मीन्स हमारा जो नंबर है वो बार बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इतना ही लिख देंगे क्योंकि हमारे कोड के अंदर जो था वो सिंपल यही चीज़ थी कि वो चेंज नहीं हो रहा था। अब हमारे पास सिंपल एक आंसर आ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 2 1, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। व्हाट?
It is not giving a good thing. Oh, oh, man, shit. We have to check another number, which is org. Org num would be the num. Alright. Now what we have to do is to compare the original num with the num. Now it will take 1 2 3 2 1. It is a palindrome number. Now we have to check 1 2 3 4. It is not a palindrome number. So this is the complete answer of the palindrome number. It's an easy thing, you can use this. Now it's time to check our LeetCode problems. We have an object here, so you have to use it. All right, just we have to take through numbers things. We didn't need any class because it's a class is already created here, so we have to use x instead of the num, and we have to use num here. Right, going good. We have to use x here, and we good to go. All right, it would be num and return. It would be a good thing. Now we have to run this code. अच्छा, यहाँ जो है इशू आता है क्योंकि ये जो है ना 3.8 समथिंग का जो है इनका टर्मिनल है, which is too old in the modern Python. Actually, we are using here Python 3.11.8, and this is about Python 3.8. Right, so that's why we are getting errors. We have to change the syntaxes. We can use GPT for the solutions. Now it's time to submit our question. It's accepted our cases on the here, and we have 14 milliseconds and beats 38.35 results. It was a good result. So this is for today. Hopefully you will like it.